We will examine the concepts and cases of Article 32. आपको याद रखना है from PT's point of view that Dr. B.R. Ambedkar called Article 32 as the soul of Indian Constitution, as the soul of Indian Constitution. And इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है that Article 21 is called the heart of Indian Constitution and Article 22 is called the ugly provision of Indian Constitution. ये कभी कभी पीटी में पूछ लेते हैं and that is why you must remember this. अब हमको पता है that if any of your fundamental rights is breached, any of your fundamental rights is breached, then you can approach the Supreme Court. You can approach the Supreme Court under Article 32 of Indian Constitution. And you can also approach the High Courts. You can also approach the High Courts under Article 226 of Indian Constitution. Now in the case of Ramesh Thapar versus State of Madras. Ramesh Thapar versus State of Madras. In this case, Supreme Court held that Supreme Court is the protector of fundamental rights and anyone can approach the Supreme Court under Article 32. Under Article 32 if their fundamental rights are violated. अब इसके बाद we have the case of Daryao versus State of UP. अब in this case, Supreme Court held that if the matter has been heard by the High Courts, if the matter has been heard by the High Courts under Article 226, then the writ under Article 32, writ under Article 32 is barred by res judicata, is barred by res judicata. अब रेस जुडिकाटा के बारे में हम सीपीसी में देखेंगे, लेकिन आपको इस जजमेंट का एसेंस पता होना चाहिए कि एक बार आपके मैटर को हाई कोर्ट ने सुन लिया है 226 के अंडर एंड अपना ऑर्डर भी पास कर दिए, अब इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हो फॉर इशूइंग रिट अंडर आर्टिकल 32, देन द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब आप आर्टिकल 32 क्लॉज 2 देखोगे, वहां पे लिखा हुआ है दैट यू कैन एनफोर्स योर फंडामेंटल राइट्स. You can enforce your fundamental rights through 5 writs: mandamus, quo warranto, prohibition, certiorari and habeas corpus. अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या होता है. ओके, लेकिन आपको ये भी याद रखना है that the concept of writs has been adopted from United Kingdom. अब हम आते हैं सबसे पहले रिट के ऊपर which is habeas corpus. अब the writ of habeas corpus says that if you have been illegally detained, then you have the remedy of the writ of habeas corpus. यानी अगर फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन एंड ए को पुलिस ने इलीगली डिटेन कर लिया है, तो यहाँ पे ए कैन अप्रोच द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स द रिट ऑफ habeas corpus. Upon habeas corpus, we have the leading case of A.K. Gopalan versus State of Madras. यहाँ पे कोर्ट ने बोला था that the writ of habeas corpus can be issued to release a person who is illegally detained. अब in this case, Supreme Court held that at the time of hearing of the writ of habeas corpus, the production of the detained person is necessary. अब इसके बाद we have the famous case of ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla. It is also called the habeas corpus case. अब यहाँ पे हुआ क्या था that the president proclaimed the emergency order under article 359 of Indian Constitution. यानी देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई थी, तो ये उस टाइम का केस है. अब बिकॉज ऑफ आर्टिकल 359 ऑल द फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड. अब इस केस में क्या होता है, अ प्लेंटिफ अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इन्वोकिंग द रिट ऑफ habeas corpus. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे habeas corpus के रिट को इशू करने के लिए मना कर दिया था. Supreme Court declined to issue the writ of habeas corpus, and here the Supreme Court held that when a presidential order is passed under Article 359, then the court cannot issue the writ of
then the court cannot issue the writ of habeas corpus. But इसके बाद 44th amendment आती है हमारे सामने, which said that Article 20 and Article 21 can never be suspended. यानी आगे जाके अगर दोबारा से कभी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. एंड आपको पीटी के हिसाब से ये भी याद रखना है दैट इन द केस ऑफ एडीएम जबलपुर, जस्टिस एच आर खन्ना gave a dissenting judgment. अब इसके बाद we have the case of सुनील बत्रा वर्सेस Delhi administration. अब in this case, Supreme Court issued the writ of habeas corpus. Supreme Court issued the writ of habeas corpus on the letter of the prisoner, in which he wrote that he was subjected to ill treatment and torture. यानी यहाँ पे लेटर के बेसिस पे हिबियस कॉर्पस के रेट इशू कर दी गई थी. एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिलैक्स द रूल ऑफ locus standi and said that any person can apply on the behalf of the detained person. यानी पे जरूरी नहीं है कि जो पर्सन डिटेन हुए हैं वही अपनी खुद की रेट फाइल करे. उनके फैमिली मेंबर्स या उनके फ्रेंड्स जो हैं वो भी हिबियस कॉर्पस के रेट उनके बिहाफ पे फाइल कर सकते हैं. अब इसके बाद वी हैव द रेट ऑफ मैंडेमस. द रेट ऑफ मैंडेमस इज इशूड व्हेन द पब्लिक अथॉरिटी इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन. यानी अगर सरकार कोई काम नहीं कर रही है तो यहाँ पे मैंडेमस की रेट इशू हो सकती है. लेकिन इट कैन नॉट बी इशूड व्हेन द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, अगर चंबल में मेट्रो नहीं है तो यहाँ पे रेट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं हो सकती है फॉर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश कि चंबल में मेट्रो लेके आओ, बिकॉज हियर द पावर टू सैंक्शन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो इज डिस्क्रिशनरी एंड इज डिपेंडेंट अपॉन द विल ऑफ द गवर्नमेंट. अब यहाँ पे हमारे सामने केस आता है. वी हैव द केस ऑफ टी.के. रंगाराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. अब इस केस में क्या होता है that the state of Tamil Nadu dismissed 2 lakh government employees. अब यहाँ पे these government employees approached Madras High Court for the enforcement of their fundamental rights. लेकिन Madras High Court dismissed their application on the grounds of alternate remedy in the service tribunal. यानी मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि आप पहले सर्विस ट्रिब्यूनल में जाओ एंड वहां पे आप ट्राई करो रिलीफ को लेने का. अब इसके बाद दीज एम्प्लॉइज फाइल्ड अ रिट पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट. बट हियर द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा मस्ट अप्लाई इन दिस केस. बिकॉज द हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी हर्ड देयर मैटर एंड अभी सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन को लेके नहीं आ सकते. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट High Court did not decide on merits. And we cannot say that the concept of res judicata is applicable in this case. Here the Supreme Court ordered the government to reinstate these employees. अब इसके बाद we have the case of State of MP versus GC Mandawar. अब in this case, the State of MP announced 4% dearness allowance 4% dearness allowance to the government employees, but later on they refused to provide this dearness allowance. यानी एक टाइप ऑफ बोनस होता है. एमपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था लेकिन बाद में इन्होंने ये बोनस इशू करने से मना कर दिया. अब हियर द सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन टू इशू रिट as here it is the discretionary power of the state government and hence no writ of mandamus can be issued in this case. अब इसके बाद we have the case of Binni Limited versus Sada Sevan. अब in this case it was held that if the private authorities are engaged in the functions of the public authorities, then the writ of mandamus can be issued. यानी अगर पब्लिक अथॉरिटीज का काम प्राइवेट अथॉरिटीज कर रही हैं तो यहाँ पे रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट पर्संस एज वेल.
You have to remember that the writ of mandamus, the writ of mandamus is the only writ that can be issued against the private people. और कोई भी ऐसे writ नहीं है जो private individuals के against issue हो सकती है. अब इसके बाद we have the case of Riju versus State of Assam. अब in this case, it was held that the writ of mandamus cannot be issued against the subordinate judiciary as it is not state. अब हम आते हैं the writs of prohibition and certiorari. हमको याद रखना है that the writs of prohibitions and certiorari can be issued against the quasi judicial bodies, judicial and quasi judicial bodies. यानी कि अगर आपको लोअर जुडिशरी के अगेंस्ट कोई रिट इशू करवानी है then you will have to choose between prohibition or certiorari. अब in the case of Surya versus Ramchandra Rai, here the court held that the writ of prohibition can be issued. The writ of prohibition can be issued when the trial is going on, but the writ of certiorari can be issued. The writ of certiorari can be issued when the trial has ended. अब आपको ये चीज भी याद रखनी है that what are the quasi judicial bodies. हमको याद रखना है that when the executive is performing the functions of the judiciary, then they will be called quasi judicial bodies. For example, आप BNSS में देखोगे कि even the IS officers they can also decide some cases. तो यहाँ पे जब वो एक जज का काम कर रहे हैं then they will be called quasi judicial authority. तो ये चीज हमको याद रखनी है कि मैंडेमस के रेट हम जुडिशियल एज वेल एज क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं. अब इसके बाद वी हैव द रेट ऑफ quo warranto. This writ can be issued when you have to question the appointment of a public authority or when you think that a government officer does not have the necessary qualification. For example, A is a person, इसने LLB की डिग्री पूरी नहीं करी है एंड इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जॉब मिल गई है. अब यहाँ पे द रिट ऑफ quo warranto कैन बी इशूड अगेंस्ट ए कि आप इस पोजीशन पे कैसे आ गए हो, आप इसके लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो. अब यहाँ पे वी हैव द केस ऑफ GD करकरे versus TL Shevde. Up in this case, the applicant challenged the appointment of the Advocate General of the Madhya Pradesh. The applicant said that the Advocate General does not have the necessary qualifications. अब यहाँ पे the respondent said that the applicant does not have the locus standi to file this application. Up here the Supreme Court held that any person can file this application and here no locus standi is required for the writ of quo warranto. So we should remember these facts about writs.